गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया जापान टाइज। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो जापान के हैं वो भी इंडिया पर ऑफिशियल विजिट पर आए थे और उन्होंने जो है पीएम मोदी से जो है वो बायलैटरल टॉक्स किए हैं। आपको पता है कि दोनों कंट्री स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो शेयर करती है। 2011 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काइंड ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया था। इंडिया उनका इंडिया का जो है इंडिया उनका 18th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जापान का। और इंडिया के लिए जापान 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है बाय 2020। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो लगभग 36.94 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है जापानीज़ इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में रही हैं। और हमने एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी साइन किया है उनके साथ, मतलब जापानीज़ येन और रुपी में ट्रेड करने का जो है वो एक एग्रीमेंट हमने अक्टूबर 2018 में उनके साथ साइन किया था। फिर सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव भी जो है हमने इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अप्रैल 2021 में निकाला था। अगर हम ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देखें जापान जापान की, तो वो पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एनवायरनमेंट, सोशल सेक्टर सभी में मौजूद है। लगभग 2.3 बिलियन डॉलर की जो है वो 2020-2021 में तक जो है वो इन्वेस्टमेंट जापान ने इंडिया में की है। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बहुत ही रॉबस्ट है। हम जो है डिफेंस और सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है हम 2+2 मीटिंग भी करते हैं फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के लेवल पर। और हमने एक रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज जो काइंड ऑफ आपका जो है एक तरह से म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स पैक्ट होता है, वैसा ही ये पैक्ट हमने सितंबर 2022 में उनके साथ साइन किया था। जापान जो है वो मलाबार एक्सरसाइज में भी रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा है 2015 से। अपार्ट फ्रॉम दैट धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, ये एक्सरसाइज भी हम उनके साथ कंडक्ट करते हैं। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी है। बहुत सारे हम रियलिस्टिक एनर्जी ट्रांजिशंस कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। सिविल न्यूक्लियर डील भी नवंबर 2016 में साइन की थी। जापान ने पहली बार किसी नॉन एनपीटी मेंबर के साथ ये सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली कहा है कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है 2015 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने लगभग 35,000 फैक्टरिंग यूनिट्स जो है वो पर मंथ जो है वो सर्विस करना शुरू कर दिया है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है। तो ये जो बिल्स होते हैं, समझ लो कि मैं एक एमएसएमई हूँ, मुझे किसी कस्टमर से 1 लाख रुपया लेना है ना? तो मैंने उनको बिल जनरेट कर दिया कि मुझे आपसे 1 लाख रुपया लेना है। लेकिन और समझ लो किसी फ्यूचर डेट पे, फॉर एग्जांपल नवंबर 2023 में मुझे उनसे 1 लाख रुपया लेना है, कि मैंने बिल जनरेट कर दिया। लेकिन मुझे समझ लो जुलाई में ही ज़रूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक अ, ऐसा इन्वेस्टर देखूंगा जिसको कहूँगा कि आप मुझे 95,000 या आप 98,000 रुपीज़ जुलाई में ही दे दो, और आप ये मुझसे 1 लाख रुपए का जो है ये जो बिल है ये ख़रीद लो। ठीक है। उसको क्या फ़ायदा है इन्वेस्टर को कि वो 98,000 में ख़रीदेगा और नवंबर में उसको 1 लाख रुपए पूरा उस कस्टमर से मिल जाएगा। ठीक है। रिस्क भी है, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन अगर मिला तो जो है उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे नवंबर तक का रिस्क के लिए वेट नहीं करना पड़ा, मुझे पहले ही जो है पैसा मिल गया। तो इसीलिए एमएसएमईज़ के रिस्क को कम करने के लिए ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म निकाला गया था। अब इसमें जो चाहे कॉरपोरेट सेक्टर का से बिल्स जनरेट हुए हों, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी जो अगर बिल जनरेट हुए हो एमएसएमईज़ के लिए, तो एमएसएमईज़ उनको सेल करके जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ एमएसएम ही इस ट्रेड सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरबीआई ने कंपलसरी तो नहीं बनाया है हर बायर, सेलर और फाइनेंसर को जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कुछ सेगमेंट्स ऑफ कंपनीज जो है उनको मैंडेटरीली रजिस्टर करने को कहा गया है बिफोर दे कैन ट्रेड विद एमएसएमईज। ठीक है। तो ट्रेड सिस्टम वर्क कैसे करता है, आपको बेसिक पता हो तो बिडिंग होती है इसमें। समझ लो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि जुलाई में मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो मैं बिडिंग मंगाऊंगा इन्वेस्टर्स की कि जो है मुझसे कोई ख़रीदना चाहता है, मेरे पास 1 लाख रुपए का बिल पड़ा है जो नवंबर में बिकेगा। तो सोचो एग्जांपल लो कि कोई किसी ने कहा कि हाँ मैं ख़रीदने को तैयार हूँ, 99,000 भी दूंगा मैं आपको, मैं आपसे ये बिल ख़रीदने को तैयार हूँ। तो बिडिंग में मैंने 99,000 वाला वो ख़रीद लिया। ठीक है। मुझे तो सिर्फ 1,000 का लॉस हुआ, लेकिन जो है एज़ कम्पेयर टू बिडिंग में जो है वो मुझे ज़्यादा प्राइस मिल सकता है।
ट्रेड रिसीवेबल्स यही आपको होता है कि अमाउंट ओड टू अ बिजनेस बाय इट्स कस्टमर्स, उसको आप बेच रहे हो पहले से ही ताकि आपको पहले ही पैसा मिल जाए, आपका रिस्क खत्म हो जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पार्किंसंस डिसीज़, सोशल इश्यूज़ का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक रीसेंट साइंटिफिक रिव्यू ने फाइंड किया है कि फिजिकल एक्सरसाइज अगर की जाए तो उससे मूवमेंट रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के वो कम किए जा सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। तो पार्किंसंस डिसीज़ क्या है? एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पेशेंट के पास बहुत ही लिमिटेड या फिर ऑलमोस्ट नील कंट्रोल रह जाता है मूवमेंट और बॉडी के ऊपर, और ये प्रोग्रेस करता है प्रोग्रेस जो है एज के साथ। कोई क्योर नहीं है इसका। इसमें नर्व सेल्स जो है वो डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस डोपामिन भी जो है वो कम हो जाती है। तो जनरली इसका सिम्टम्स में क्या होता है? ट्रेमर्स, हाथ कांपेंगे, रिजिडिटी, स्टिफनेस आ जाएगी लिम्स में, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। तो पार्किंसंस के जो पेशेंट होते हैं वो अदर सिम्टम्स भी जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एट्सेट्रा। कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट, कोई भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता है डायग्नोस करने को पार्किंसंस डिसीज़ को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये टॉपिक हमारा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है उन्होंने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट को करेक्ट किया है, जिसमें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ही एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है, उन्होंने इसको हर साल पब्लिश करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होता है पैटर्न्स ऑफ टेररिज्म के ऊपर। 163 कंट्रीज़ को जो है वो इसमें रैंक किया जाता है। टेररिज्म ट्रैकर ऑफ ड्रैगन फ्लाई का जो है वो डेटा यूज़ किया जाता है और उसके बेसिस पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो जो 2023 की रिपोर्ट है उसमें अफगानिस्तान को टॉप स्पॉट मिला है, इंडिया का 13th रैंक आया है, पाकिस्तान ऑफ कोर्स सेकेंड रैंक पर इसमें रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रकून डॉग्स। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक न्यू एनालिसिस आया है, डेटा कलेक्ट किया गया है और उसमें पता लगा है कि हुनान का जो वुहान जो रीजन है वहाँ पर कोरोना वायरस रकून डॉग से निकला था। ठीक है, अब ये रिपोर्ट कितनी सही है दैट्स अ सेपरेट मैटर, लेकिन रकून डॉग्स कौन होते हैं? ना तो वो डॉग्स हैं ना ही रकून्स हैं। ये एक तरह से कैनिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं जो कि क्लोजली फॉक्स से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कार्निवोर मैमल्स होते हैं। दो तरह की इनकी स्पीशीज़ होती है, ये ओमनीवोर्स होते हैं और ये रोडेंट्स और बेरीज पर जनरली जो है वो खाते जो है वो उनको कंज्यूम करते हैं। तो जो रैकून डॉग्स हैं वो कहाँ पर फाइंड किए जाते हैं? जनरली ईस्ट एशिया में, जैसे पार्ट्स ऑफ चाइना, कोरिया, जापान, वहाँ पर ये मिलते हैं। इनको हम तानुकी कहते हैं वहाँ पर। और ये यूरोप में भी मिलते हैं, और लेकिन ये फर ट्रेडर्स जो 1920s में ईस्ट एशिया से वहाँ पर लेकर इसको गए थे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं LTRO एंड TREPS। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक्स जो है वो ओवरनाइट रेट्स को हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस मंथ, बिकॉज एडवांस टैक्स और GST की पेमेंट्स आनी है, उससे लिक्विडिटी श्रिंकेज जो है वो आ जाएगा। तो ऑफकोर्स रेपो रेट जो है वो जो है ये आपके इसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो क्रेडिट डिमांड और रिवर्सल ऑफ कोविड एरा जो है सिचुएशन की वजह से जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस जो है जो RBI ने चलाए थे उससे अब जो कैश था वो बैंकिंग सिस्टम से निकाल लिया गया। ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन ना आ जाए। लेकिन अब डेटा ये कह रहा है कि जो ट्राई पार्टी रेपो सिस्टम स्ट्रैप्स जो है वो उसकी और जो है म्यूचुअल फंड्स की पार्टीशन जो है पार्टिसिपेशन वो भी बढ़ गई है, और उसके वजह से जो है ये एक तरह से पैसा मार्केट से लिक्विडिटी श्रिंकेज जो है वो होने वाला है, और उससे जो है ऑफकोर्स आपके रेपो रेट्स पर जो है ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो LTRO क्या है? एक टूल है जिससे कि बैंक्स 1 से 3 साल के लिए फंड्स बोरो कर सकते हैं आपके RBI से एट रेपो रेट। इसको हम टारगेटेड LTRO कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो हैं, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को क्या कहता है कि आप जो इसमें बोरोइंग कर रहे हो जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट में जो है वो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था जब सोवरेन डेट क्राइसिस आया था 2008 का। तो ये ट्राई पार्टी रेपो या ट्रैप्स क्या होता है? तो ये ट्राई पार्टी रेपो एक टाइप ऑफ रेपो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर थर्ड एंटिटी, कोई भी बॉरोअर और लेंडर के अलावा कोई थर्ड एंटिटी, जैसे इन केसेस में शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, वो ऐसी सर्विसेज फैसिलिटेट कराते हैं जैसे कि कोलेटरल सिलेक्शन कराना, पेमेंट सेटलमेंट करना। तो ये ट्राई पार्टी रेपो एक तरह से एक फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसा आपका मार्केट रेपो होता है, लेकिन ये सेंट्रल बैंक का रेपो रेट से कंपैरिजन इसका नहीं होता है।
ठीक है। तो एलिजिबल ट्राई पार्टी एजेंट्स कौन है? जिनको आरबीआई से ऑथराइजेशन मिल जाती है। मोस्टली ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं और ये बोरोअर और लेंडर के बीच में ऐसे रेपो कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं। ठीक है, किसी को बोरोइंग की ज़रूरत है तो वो लंबे टाइम के लिए बोरो कर रहा है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एज एन इंटरमीडिएट उसमें काम करेंगे। ठीक है। अब एलिजिबल कोलेट्रल क्या रहता है इसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़। तो मोस्टली कॉरपोरेट्स ही हैं जो ये ट्राई पार्टी रेपो जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और जो है 1 से 3 साल के लिए फंडिंग जो है वो रेपो रेट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैंड बैटरी। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड जो है उन्होंने वर्ल्ड की पहली सैंड बैटरी लगाई है, जिससे जिससे क्या होगा कि वो हीट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर सकेंगे महीनों तक। तो ये सैंड बैटरी है क्या? ये ऑफ कोर्स सैंड से बनी है, जो कंस्ट्रक्शन साइट से उठाई गई है सैंड, और ये राउंड द ईयर एनर्जी सप्लाई देने के लिए काम कर सकती है। सैंड को 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जा सकता है, जबकि पानी तो आपका पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या किया गया कि सैंड सिलो लगाया गया है, एक इलेक्ट्रिकल एयर हीटर लगाया गया और एयर टू वाटर हीट एक्सचेंजर लगाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि एयर को 600 डिग्री तक जो है लगभग हीट किया जाता है इन इलेक्ट्रिक एयर हीटर। उस गर्म हवा को सर्कुलेट किया जाता है उस सिलो में जहाँ पर सैंड रखी गई है। जब ये ब्लोअर जो है वो एयर जो हॉट एयर को पाइप के थ्रू सैंड सिलो में डालते हैं, तो जो एयर का टेम्परेचर जब 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो वो हीट जो है वो सैंड को जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। और ऑफ कोर्स जो सैंड ने जो गर्म किया है, उस जो जो सैंड गर्म हुई है उससे उसको यूज़ किया जाता है वाटर को बॉयल करने में, जिससे जो है पूरा हीटिंग नेटवर्क चलता है। और इसी से ही जो है जब वो बॉटल जो सॉरी जो वाटर बॉयल होता है, फिर उसके पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी इसको जो है इलेक्ट्रिकल एयर हीटर को हीट करने में लगती है, उससे 1000 टाइम्स मोर पावर ये जनरेट करके देता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये रिन्यूएबल ही सोर्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगीता कलानिधि अवार्ड। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कार्नाटिक वोकलिस्ट बॉम्बे जयश्री जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड ऑफ म्यूजिक एकेडमी फॉर 2023। हाईएस्ट अवार्ड है फील्ड ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक में, और ये अवार्ड जो है मद्रास म्यूजिक एकेडमी देती है। गोल्ड मेडल और बिरुदु पत्र दिया जाता है इसमें। ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन जब हुआ था दिसंबर 1927 में, तब ये मद्रास म्यूजिक एकेडमी बनाई गई थी। तो कर्नाटिक म्यूजिक क्या है? सदर्न इंडिया से जो है वो आपके एसोसिएटेड है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के अलावा इवन श्रीलंका में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। तो अब इसको एंशियंट हिंदू ट्रेडिशंस के बेसिस पर जो है इस म्यूज़िक को जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में हमने जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Japan ties. This topic is important for international relations. So Prime Minister of Japan has recently paid his official visit to India and held bilateral talks with PM Modi. So you know that both countries enjoy a special strategic and global partnership, and we have already signed the Comprehensive Economic Partnership Agreement since 2011. India has been the 18th largest trading partner for Japan, and Japan is the 12th largest trading partner of India in 2020. So if we look at the investments made by Japanese investments to India have been around 36.9, almost $37 billion, and it makes Japan the fifth largest source of FDI for India. We already have signed the currency swap agreement between the two countries in 2018. So we already launched the India, Japan, and Australia launched this supply chain resilience initiative in April 2021 also. So, what is this official development assistance? So, official development assistance is that has been given by Japan to India. Can be seen in priority areas like power, transportation, environment, and social sector. Apart from that bullet train project that is called the Mumbai Ahmedabad high speed rail, Western dedicated freight corridors, DMIC, Chennai Bengaluru industrial corridor, etc. All these are being made through the official development assistance of Japan. So Japan has official development disbursement to India in 2020-2021 period stood at about $2.3 billion.
So we already have this joint declaration on security cooperation between the two countries. We conduct the 2+2 meetings between the foreign and defense ministries, and we also have a kind of mutual logistics pact. Of course, it's customized between India and Japan, and India is only the second country after Australia with which Japan has signed such an agreement. Japan is also permanent member of Malabar exercise since 2015, and apart from that, we also conduct the Dharma Guardian and Veer Guardian exercises. We already have a clean energy partnership that was launched during the annual summit last year, and a civil nuclear agreement exists since 2016. And Japan, this is the first time that Japan has signed such a nuclear agreement with a non-signatory of NPT. So the next topic is trade receivables discounting system. This topic is important for your economy section. So RBI governor has recently said that TREDS platform, which was introduced in 2014 for MSMEs to finance or discount their invoices, has financed about 35,000 factoring units monthly. So it's what happens here is that, like I was giving you an example, that if I am an MSME and I have an invoice of 1 lakh rupees, which I would be receiving in November 2023. But let's suppose that I want that money in July 2023 itself. So what I would do, I would go to this platform. I would ask the investors or the buyers, in this case, they can also be called buyers, that I want this money. I have this 1 lakh rupee bill which I would be receiving in November 2023, but I want this money earlier. So let's bid who would pay me the maximum amount, so that they can purchase this 1 lakh rupee bill from me. So let's suppose that the highest bidder says that I would be willing to give you 99,000 rupees if you give this 1 lakh rupee invoice to me. So I would be, of course, willing to share with that buyer, and I would sell my invoice to that buyer. When November 2023 comes, then this 1 lakh rupee would be transferred to that particular buyer who has purchased this bill from me at 99,000 rupees. So he would be making 1,000 rupees as profit. So that's how this is the platform where this is an electronic platform where MSMEs who have invoices from corporates, including government departments and public sector units, they can sell these invoices to the buyers and financiers, but only MSMEs are allowed to participate as sellers here. So RBI has not made it compulsory for any of the buyer, seller, or financier to mandatorily register themselves on TREDS platform. So bidding happens on this platform, and then the payment is made by the financier to the MSME seller at the agreed rate of financing or discounting, and the payment by the buyer to the financier is made on the due date. So you know that trade receivables, this is basically the invoice that is set to be that is set to be expected by me by November 2023 in the example that I took earlier. So the next topic is Parkinson's disease. This topic is important for your social issues. So findings of a recent scientific review has said that physical exercise can help us to improve the severity of movement-related symptoms and quality of life in people with Parkinson's disease. So Parkinson's disease is a progressive neurological disorder, and it affects the nervous system. A patient holds limited or no control over his movements and body and balance once the person is suffering from this disease. It basically occurs and progresses with aging, and it occurs very slowly. Currently, it has no cure. It is caused by degeneration of nerve cells, and the nerve cells basically die. They become impaired, and they start losing the ability to produce an important chemical called dopamine. So what happens here is that tremors, rigidity, slowness of movement, impaired balance and coordination happens. And the Parkinson's patients, they also suffer from other symptoms like difficulty in swallowing, speaking, chewing, etc. Currently there is no test, neither the blood test or the radiological test, which can diagnose Parkinson's disease. So the next topic is Global Terrorism Index. This topic is important for international relations. So Institute for Economics and Peace, which releases this Global Terrorism Index, for this year they have by mistake uh, taken the Communist Party of India as the list as one of the deadliest terror groups of 2022. So what is this Global Terrorism Index? So this is released by a global think tank named IEP, based in
Sydney, that is in Australia, and it provides a comprehensive summary of the key global trends and patterns in terrorism over the last 15 years. So it ranks about 163 countries using data from Terrorism Tracker of Dragonfly. So, what are the highlights of this global terrorism index? So, Afghanistan retains the top spot. India has been ranked at 13th on this index, and Pakistan is the second largest, has seen the second largest increase in terror-related fatalities globally last year. So the next topic is raccoon dogs. This topic is important for your environment section. So a new analysis of genetic data collected from Hunan seafood market of Wuhan has linked coronavirus to raccoon dogs. So this report is by The Atlantic, and the veracity of this report, of course, is questionable as of now. But anyways, what we have to see is what are the raccoon dogs. So these raccoon dogs are neither dogs nor raccoons. They belong to the canid family, and they're closely related to foxes. So they belong to a family of carnivorous mammals. There are two kinds of species. These animals are basically omnivores, and they relish food sources like rodents and berries. So where are these raccoon dogs found? So they originally belong to East Asia, and they are commonly found in China, Korea, and Japan, where they are locally known as tanuki. They're also found in Europe, but they were transported from this region by fur traders in 1920s. So the next topic is LTRO and TREPS. This topic is important for your economy section. So banks are expecting overnight rates to edge at the higher end of this month because liquidity shrinkage would be caused because of the advanced tax and GST payments that are coming by the end of this month. So credit demand and reversal of COVID era's targeted uh, long-term repo operations have also sucked out cash out from the banking system. uh, the weighted average rate in tri-party repo system has also which also draws mutual funds participation has increased. So what is long term repo operations? So it's a tool that allows the RBI or the central banks uh, give to give money to or to lend money to the banks for 1 to 3 years. And why it is important? Because this money that these banks get, they invest it in investment grade corporate debt. So where this system was introduced by the European Central Bank in 2008 to stabilize their economy. Then what is tripartite repo or TREPS? It's a type of a repo contract, but this is a contract between two parties who want to borrow and lend, and the third entity, in this case a scheduled commercial banks, uh, comes as an intermediary and helps in collateral selection, payment and settlement, etc. So this is a financial market instrument like the market repo, but it is not the RBI is basically not involved here. Okay, so let's suppose that I want money. I'm a corporate company. I want money for this for any purpose for a period of 1 or 3 years, and I'm willing to trade at repo rate. So scheduled commercial banks would come into picture, and I would be given money by the lender, and at a predetermined rate, or by rather by the pegged to the repo rates, and scheduled commercial banks would facilitate this entire contract. So who are these eligible tri-party agents? Mostly they are the scheduled commercial banks who have received authorization from RBI, and the eligible collateral here is government securities and corporate securities. So the next topic is sand battery. This topic is important for your science and tech section. So Finland has installed the world's first sand battery, which can store heat from from renewable energy sources for months. So what is a sand battery? It is made from the sand collected from construction sites. It can solve the problem of round the year energy supply. You know that sand can be heated up to 600 degrees Celsius, whereas water would start boiling at 100 degrees Celsius. So this storage system has three main components. First, of course, this is the place where sand would be kept, the sand silo, an electric air heater, and air to water heat exchanger. So for charging the sand silo, the air is heated at about 600 degrees Celsius in an electric air heater. Then this hot air is circulated inside the silo where the sand is kept, and the blowers, when the storage enters the discharging state, then these blowers are used to pump air into the pipe where the
sand is kept. So once the air reaches 200 degrees Celsius temperature, this heat is transferred from the air to water heat exchanger. Then it is used to boil water, and then it is sent to the heating network. So this storage system basically requires electricity at all times, because you are using electricity to heat the air. And but the good thing here is that the amount of electricity that it is consuming in this process is less, and almost 1000 times more electricity is given in return. So the next topic is Sangeeta Kalanidhi Award. This topic is important for your art and culture section. So recently, Carnatic vocalist Bombay Jayashri has been selected for Sangeeta Kalanidhi Award of Music Academy for 2023. It's the highest award in the field of Carnatic music, and it is conferred by the Madras Music Academy, which comprises of a gold medal and Birudo Patra. So this is a landmark institution in the history of fine arts. This Madras Music Academy, and it's an offshoot of All India Congress session, which was held in December 1927. So this Carnatic music is associated with southern India, and it includes the states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, etc. But it is also practiced even in Sri Lanka. So it is one of the two major genres of Indian classical music which have evolved from ancient Hindu traditions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with the new topics. Until then, goodbye and take care.